मेरा नाम अनुज सिकरवार है, जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं एक गवर्नमेंट सब इंजीनियर हूँ। मैंने आई टॉसिस की सर्जरी करवाई है। ये मुझे बचपन से ही है। मुझे इससे देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई, बट एक डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती थी। देखने में अच्छा नहीं लगता है इसको। मैं अपने होम टाउन में गया था, ग्वालियर में एक हॉस्पिटल था, तो उसमें टेस्ट नहीं हुआ जी। मुझे आई7 के बारे में इंटरनेट, गूगल और यूट्यूब से पता चला। मुझे काफ़ी वीडियोस देखी, तो जिससे ट्रस्ट बिल्ड हुआ। So I am Dr. Ruchi Goyal, and I am senior consultant at I7 Group of Hospitals. And this is a patient, a 24-year-old male who has right congenital severe ptosis with poor levator action, and he was operated in 2008 earlier, which records are not available, but we can see a scar mark over here. So some kind of a resection procedure had been performed, and when he presented to us, the correction was inadequate, and he wanted a cosmetic correction. Now we are going to perform, because the LPS, that is levator action, is poor, we are going to perform a sling surgery, and I am going to use this is a silicone sling that I am going to use, and this is the material. So this silicone sling is passed from the forehead, and it's going to elevate the lid on this side. So now to maintain symmetry, that means when the patient looks down, the eyes should look symmetrical. Some patient opt for a bilateral surgery. So even though this eye, the left eye is normal in this patient, we are going to go for a bilateral surgery. The only difference that we are going to make is that here we are going to pull tighter. Here we'll just anchor it, so that when the patient looks down, the eyes move together. So this is a bilateral silicone sling surgery being performed for congenital simple severe ptosis with poor LPS action. So let us see how we are going to proceed. So we are going to mark the center. So you can see this is the center, that is the highest point of elevation. So we'll mark the center, and now caliper 3. So we are going to make 3 points. Some people like to make just 2 points. My personal preference is to make 3 points, and so just check it. So this is 3 millimeter, and this marking is done about 3 millimeter. So this is the marking from the lid margin, and 1 point will be lateral to it, and that is on this side, and the other point is going to be medial to it. And after that, I am going to go towards the forehead. This silicone has to be anchored on the forehead, so I am marking bang in the center across it, and a little medial to this point, and a little lateral to the point on the lid margin. So the first thing I am going to do is I am going to pass my stay sutures to pull the lid down. So now we are going to mark our incisions. So this is the central incision, this is the lateral incision, and this is the medial incision. So this is all, and these incisions need not be sutured. So the concern usually is कि यहाँ टाँके आएंगे कि तो नहीं, यहाँ नहीं आएंगे टाँके. Another incision is marked bang in the center. So this is the main incision, and this has to be a little deeper because we have to bury the silicone. And these incisions, as I had told, this one is a little medial to the lid incision, and this one is a little lateral to the lid incision. You will have a lifting effect. So you can just go back and check that you don't pull too hard. So if you see there is a greater lift at the lateral end, so what we can do is we can pull the medial end more. So that's how you can titrate basically. Now I am going to suture it in layers, so that I have multiple layers covering my silicone, because the biggest problem with silicone is extrusion. So you can also use Vicryl to close it. I personally like to use silk suture because it causes less reaction. I want this area to heal very fast. Like to place a bandage contact lens following the surgery, so that the patient, even if the Bell's recovery is a little delayed, the patient remains comfortable. Only thing you have to be careful, no ointments to be added. The
तो कल हमने इनका बायलैटरल स्लिंग सर्जरी किया था और राइट आई में इनको टोसिस था सिवियर, जो कि पहले एक बार 2008 में ऑपरेट हो चुका था। इनकी अब ये देखिए आप सामने से भी ये सिमेट्रिकल है, ये एक फर्स्ट डे पोस्ट ऑप है, अभी थोड़ी सूजन है जो कि उतर जाएगी और उसके बाद ये और बेटर हो जाएगा। दोनों आँख का करने का ये लाभ रहता है, बेटे नीचे देखो थोड़ा, तो अगर हम दोनों ऊपर देखो, अगर हम दोनों आँख नहीं करते तो ये वाली आँख जिसमें हमने स्लिंग डाली है उसमें क्योंकि मूवमेंट लिमिटेड है, उसकी मसल तो काम नहीं करती, तो वो दोनों एसिमेट्रिकल दिखती है, यानी कि एक अलग दिखेगी दूसरी अलग दिखेगी। दोनों एक साथ करने से क्या होता है, सिमेट्री आ जाती है। और अभी थोड़ा और टाइम के साथ साथ और बेटर होता जाएगा क्योंकि कल ही ऑपरेशन हुआ है, तो अब हम इनको एक्सरसाइजेस भी बताएंगे। आँख बंद करो, खोलो बेटा। तो ये अब इनको सारा दिन बैठ के एक्सरसाइजेस करनी है जिससे इस आई का मूवमेंट वापस रिकवर हो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कि इनकी सफाई, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इनको आप वाइप्स खरीद सकते हैं, तो इनको सफाई करनी है। टाँका केवल इधर ही लगा है, ये सारे निशान जो हैं केवल जहाँ से स्लिंग हम पास करते हैं उसके होते हैं। तो सबसे पहले इधर साफ़ करना है, दर्द नहीं हो रहा, फिर इधर साफ़ करना है और फिर उसके बाद नीचे देख बेटे, आप ये देखेंगे स्लिंग यहाँ से भी पास की जाती है, तो ये भावों को ऊपर चढ़ा के मरीज़ नीचे देखेगा और हल्के हाथ से इधर भी साफ़ करना है। नहीं तो क्या होता है कि ये फोल्ड जब तक जाते नहीं हैं, अभी जैसे जैसे सूजन उतरेगी ये सब फोल्ड्स चले जाएंगे, तो तब तक यहाँ इसके नीचे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये सफाई मेन चीज़ है। दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखना है कि अभी एकदम कल ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा आदमी डरता भी है, हल्का दर्द भी रहता है, तो वो क्या करते हैं, आँख नहीं भींचता, तो कॉन्शियसली बार बार बताना होता है कि मरीज़ आँख बंद करे खोले, तो ये घर वाले जो हैं वो उसमें सहायता कर सकते हैं। और उसके बाद सोते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि जब तक ये मूवमेंट पूरा रिकवर ना करे, आँख बंद करो बेटा, तो नॉर्मली आँख बंद कर लो, बंद, तो ये काली पुतली जो है अंदर ऊपर की तरफ घूम जानी चाहिए। तो इसमें इनकी घूम रही है, इनकी बेल्स अच्छी है, लेकिन कई बार सोते सोए जब तक पूरी ये रिकवरी ना हो जाए, आँख पूरी अच्छे से बंद ना होनी शुरू हो जाए, तब तक रात को एक मलहम हम लोग डाल देते हैं। मलहम डाल के कई बार पैच करते हैं जब तक ये रिकवरी कंप्लीट ना हो जाए। कुछ हफ्तों के अंदर ही सब कुछ नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है और पेशेंट अपना काम करना शुरू कर देता है। नहीं, मुझे सर्जरी के टाइम कोई पेन, कोई इशू नहीं हुआ, इट्स नॉर्मल। पहले से काफ़ी बेटर है। ये पहले मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता था, बट अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। There is a little bit of swelling still remaining because it's an early post-op period, and eventually these all swellings would also disappear. And आँख बंद करो बेटा, you can see there's hardly any lag of ophthalmos, सामने देखो, and there again you can see a little bit of swelling at the top of the right eye, and this will also eventually decrease over the time. We will reassess him after, let's say, 1.5 months and have a look if there is anything remaining. Sometimes what happens is if it's a severe ptosis, there is a little bit of extra tissue that remains, and if required only then we perform a blepharoplasty. Otherwise most of the time these patients do very well. The advantage of a sling surgery is that it has a elasticity. So as I was telling you, a patient where we have a severe ptosis with poor LPS action, so the options that we have is a silicone sling. We can go for frontalis sling operations also. We are doing levator resection with frontalis advancement procedures. But what I have observed over the time is that if you do a bilateral silicone sling, it gives a better long-term correction as well as minimal lag of ophthalmos. So this silicone sling continues to be still one of the easiest and most reproducible surgeries in these kind of cases. And आँख बंद कर बेटा. So you can see there is no lag of ophthalmos at all. सामने देखो, and a very good correction. So many people would prefer to go for a unilateral surgery where you just you work on the eye which is involved. But what happens is if the patient looks down or so there is a certain bit of asymmetry in these patients. So to tackle that, it is always better to go for bilateral surgery, but then it's not a hard and fast rule. So we will meet him again, let's say after 4 weeks or 6 weeks, where we will have a relook as to what has happened to these folds, which eventually disappear over the time. वेरी गुड एक्सपीरियंस रहा मेरा। स्टाफ काफ़ी अच्छा है जी। मैं अपने दोस्तों में भी सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई आँखों में प्रॉब्लम है आप i7 में आके विजिट कर सकते हैं जी। मैं डॉक्टर रुचि गोयल मैम को थैंक्स कहना चाहूँगा।